Hello everyone. Today we will see about the hair, structure of the hair and its cycle. So hair क्या होता है? सिंपल हेयर क्या होता है? एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेड अप होता है प्रोटीन फिलामेंट से, जिसे हम केराटिन कहते हैं. It is an important part of appearance and creates gender identity. Humans develop hair follicles during fetal development. It is a body structure that can completely renew itself without scarring. Hair color is mostly the result of pigments, which are chemical compounds. Hair also act as a barrier to foreign particles. Trichology means क्या होता है? It is the study of hair and its diseases and care. Next is the types of hair. There are different types of the hair. First one is the lanunga hair. It develops on an unborn baby 3 months after baby's conception. It is fine and soft, grows all over the body at the same rate, shed after 4 weeks before the baby is to born. Villous hair follicle does not have oil glands. It is short, fine, downy and unpigmented hair covering terminal hair. It is long, thick, pigmented hair. It is generally found on the scalp, legs, arms and bodies of the both male and female. It is coarser than vellose hair. It is pigmented. It is produced by follicles with sebaceous glands. हेयर जो होते हैं दो टाइप्स में डिवाइड है. एक तो हेयर रूट होता है, एक हेयर शाफ्ट होता है. पहले हम देखते हैं हेयर रूट का स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है? हेयर फॉलिकल होता है. हेयर फॉलिकल क्या होता है? एक ट्यूब लाइक डिप्रेशन या फिर पॉकेट होता है इन द स्किन और द स्कैल्प दैट कंटेन्स द हेयर रूट. हेयर बल्ब क्या होता है? इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, थिकेंड और इट इज़ ऑफ क्लब शेप्ड. डर्मिस पैपिला. It is small cone shaped elevation located at the base of the hair follicle that fits into the hair bulb. Erector pili muscles. इसमें क्या होता है? It is a small involuntary muscle in the base of the hair follicle. When it contracts, we get goosebumps. Sebaceous glands. It is also said to be as oil glands. Oil glands are in the skin that are connected to the hair follicles. It secretes the sebum or fatty oil substances. Structure of the hair shaft. First in this is the hair cuticle. It is the outermost layer of the hair. It consists of a single overlapping layer of transparent scale-like cells. Protect inner structure of hair, create shines and smoothness. Cortex. It is the middle layer of the hair. 90% of the total hair weight comes from the cortex. Elasticity and color are the result of protein, keratin in the cortex. Medulla. It is the innermost layer of hair. Generally, only thick, coarse hair contains a medulla and has no known purpose. ये स्ट्रक्चर है हेयर शाफ्ट का. इसमें जो है मेड्यूला होता है, देन ये कॉर्टेक्स है और नीचे वाला जो है क्यूटिकल है. ये स्ट्रक्चर है हेयर का. इसमें हमने बताया था स्टार्टिंग में जो ये अपना हेयर रूट है, नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ डर्मल पेपिला होता है. हेयर बल्ब होता है, हेयर बल्ब में ये फिटेड होता है. एरेक्टर पिली मसल, देन सीबेशियस और ऑयल ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल, दैन अपर लेयर जो होती है आउटर लेयर स्किन की एपिडर्मिस होती है. ये स्ट्रक्चर है अपना हेयर रूट का. केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर में क्या होता है? केराटिनाइजेशन होता है. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यूली फॉर्म्ड हेयर सेल्स इन द हेयर बल्ब मैच्योर, फिल्स विथ केराटिन, मूव अपवर्ड, लूज देयर मसल न्यूक्लियस एंड डाई. Then cons. It is a major element that make up the human hair. इसमें डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वीक फिजिकल क्रॉस लिंक बॉन्ड दैट इज इजीली ब्रोकन बाय द वाटर और हीट. सॉल्ट बॉन्ड होता है, वीक फिजिकल क्रॉस लिंक बॉन्ड होता है जो कि अल्कलाइन एसिडिक सोल्यूशन से ब्रेक हो जाता है. देन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ये किसकी वजह से ब्रोकन होता है? इट कैन बी ब्रोकन बाय द एक्सट्रीम हीट. देन सम हाई टेम्परेचर स्टाइलिंग टूल्स, परमानेंट वेव्स, देन केमिकल रिलैक्सर्स. देन हेयर पिगमेंट्स कौन से होते हैं? मेलानिन होता है, द टाइनी grains of pigments in the cortex that give hair its natural color. Then melanin, that is it provides natural dark brown to black hair color. Then pheomelanin, it provides natural colors ranging from red to ginger to yellow and blonde tones.
हेयर ग्रोथ साइकिल देखते हैं, इसमें 3 साइकिल होती है, 3 फेज होते हैं. पहला जो है एनाजेन होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज होता है. दिस इज द फेज वेयर द हेयर फिजिकली ग्रोज अप्रॉक्सीमेटली 1 centimeter per month. It begins in the papilla and can last for 2 to 6 years. The span at which the hair remains in this stage of this is determined by genetics. Longer hair stays in anagen phase, the longer it will grow. During this phase, the cells in the papilla divide to produce new hair fibers, and the buries itself into the dermal layer of the skin to nourish the strand. About 85 to 90% of the hairs of one head are in the anagen phase at any given time. कैटाजन फेज को हम ट्रांजिशनल फेज होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रांजिशन होता है, लाइक वी कैसे इसमें क्या होता है, दिस फेज अलोज द फॉलिकल टू इन a sense or renew itself. During this phase, which lasts about 2 weeks, the hair follicle shrinks about due to disintegration, and the papilla detach and rest, cutting the hair strand off from its nourishing blood supply. Signals are sent out by the body, determine when the anagen phase ends and the catagen phase begins. The first signal of the catagen is a cessation of melanin production in the hair bulb and apoptosis of follicular melanocytes. While hair is not growing during this phase, the length of the terminal fibers increases when the follicle pushes them upward. Telogen phase, resting phase or shading phase. During this phase, follicles remain dormant for 1 to 4 months. 10 to 15% of the hairs on an individual head are in this phase of growth at any given time. In this phase, the epidermal cells lining the follicle channel continue to grow as normal and may accumulate around the base of the hair, temporarily anchoring it in place. At some time, the follicle will begin to grow again, softening the anchor point of the shaft initially. The hair base will break free from the root and the hair will be shed. Within the 2 weeks, the new shaft will begin to emerge once the telogen phase is complete. What is dry skin development? क्या होता है ये देखते हैं. इसमें क्या होता है, लो लेवल ऑफ सीबम होता है, and it can be prone to sensitivity. It usually feels tight and uncomfortable after washing unless some type of moisturizer or skin cream is applied. That is chapping or cracking or this signs of extremely dry, dehydrated skin. It looks dull, especially on the cheeks and around the eyes. There may be tiny expression lines on these spots and at the corners of the mouth. Causes क्या होता है ड्राई का, स्किन ड्राई होने का? The oil glands do not supply enough lubrication to the skin. As a result, the skin become dehydrated. Dry skin could be due to genetic condition, poor diet, nutritional deficiencies, especially deficiency of vitamin A and B, environmental factors such as exposure to sun, wind, cold, chemical or cosmetic or excessive bathing with harsh soaps, conditions such as dermatitis, eczema, psoriasis and seborrhea. How to take care of dry skin? Dry skin needs plenty of thorough but gentle cleansing, regular stimulation with the massage and generous quantities of oil and moisture. Need extra careful protection. Washing dry skin with soap and water not only removes green but also the natural oil protecting the skin. A moisturizer increases the water content of the outer layers of skin and it will give it a soft moist look. And skip long hot we have to skip the long hot shower bath. नेक्स्ट इज डाइट विल बी रिकमेंडेशन. इसमें क्या होता है, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन, सीड्स, नट, ड्राई फ्रूट्स ऐसे लेना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीना चाहिए. देन eat foods such as garlic, onion, eggs and asparagus that are high in sulfur, which helps to keep the skin smooth and youthful. Next we will see डिस्कस इन डिटेल अनएक्सेप्टेबल बॉडी ऑर्डर. सो बॉडी ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, दैट इज उसको दूसरा एक नाम है, दैट इज ऑस्मीड्रोसिस एंड ब्रोमीहिड्रोसिस.
उसे कहते हैं बॉडी ऑर्डर. ठीक है. इट इज़ ए कॉमन कंडीशन वेयर अनप्लीजेंट स्मेल आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी, स्पेशली फ्रॉम एरियाज लाइक वी कैन से armpits, feet and groin. While mild body odor is natural, unacceptable or offensive body occurs becomes a sociological and sometimes clinical concern. कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं इसमें देखते हैं. स्वेट ग्लैंड जो होते हैं दो टाइप के, दो मेन टाइप से. इसमें क्या होता है, स्वेट ग्लैंड में एक्सोक्राइन होता है, हेपोक्राइन होता है. तो इसमें जो एक्सोक्राइन होता है ऑल ओवर बॉडी में होता है. सिक्रीट जो करता है ये वाटरी स्वेट, दैट इज सॉल्ट वाटर. ये फिर यूजुअली ऑर्डरलेस होता है. एपोक्राइन जो होता है आर्मपिट्स और ग्रोइन में होता है, दैट इज प्रोटीन एंड लिपिड रिच सिक्रीशन. इट मेन कॉज ऑफ ऑर्डर आफ्टर द बैक्टीरियल एक्शन. Then bacterial breakdown of sweat. Sweat itself is odorless, but when skin bacteria breaks down proteins and fatty acid in apocrine sweat, they will going to produce volatile compounds like we can say isovaleric acid. पुअर हाइजीन की वजह से भी हो सकता है. एक्यूमुलेशन ऑफ द स्वेट बैक्टीरिया, डेड सेल्स एंड डर्ट promotes bacterial growth and worsen the odor. Diet food like garlic, onion, spicy food, red meat can change sweat composition and make odor stronger. Medical condition like hyperhidrosis, excessive sweating, then trimethyl, that is a fish odor smelling something, trimethyl achminuria. Then diabetes may cause a fruity or acetone like body odor due to ketoacidosis. किडनी और लिवर डिजीजेस में इट में कॉज दी मस्टी और एमोनिया लाइक ओडर. देन हार्मोनल चेंजेस, इट इज puberty, menstruation or menopause can increase apocrine gland activity and can alter the body odor. Stress में भी क्या होता है, emotional sweating from the stress activates apocrine glands producing stronger smelling sweat. मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, तो हम स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं लाइक डिओड्रेंट, परफ्यूम्स कैन बी यूज. दैन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, डेली बात करना चाहिए, 2 टाइम बात कर सकते हैं. देन सोप अच्छा वाला यूज़ करना चाहिए, एंटीबैक्टीरियल सोप यूज कर सकते हैं. प्रॉपर ड्राइंग होना चाहिए. Then properly drying and especially in this skin folds like then antiperspirants, that is ऐसे यूज़ करो जिनके अंदर जो कि कंटेन करते हैं salts, aluminum salt to block the sweat glands. देन क्लोथिंग, लॉन्ड्री, डाइटरी चेंज करना चाहिए, डाइट में कुछ चेंज होना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए. मेडिकल ट्रीटमेंट्स में क्या है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं लाइक क्लिंडामाइसिन यूज़ करते हैं टू रिड्यूस बैक्टीरिया. देन बोटॉक्स इंजेक्शन होता है जो कि ब्लॉक करता है नर्व सिग्नल्स टू स्वेट ग्लैंड्स. लेज़र और सर्जिकल ग्लैंड्स होते हैं रिमूवल. ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग डिजीजेस लाइक वी कैन से डायबिटीज़. Then what are the cleansing and care needs for the face, hand, feet, necks and scalp. So पहले हम देखते हैं फेस के लिए क्या होता है. एवरीवन स्किन हैज़ डिफरेंट क्लिनजिंग नीड. सबकी जो स्किन होती है उसका अलग अलग क्लिनजिंग की नीड होती है. लाइक वेदर यू हैव ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव और नॉर्मल स्किन, यू विल नीड टू मैच योर क्लिनजर टू योर स्किन टाइप और ऑप्टिमल रिजल्ट. पहले तो फेस वॉश होना चाहिए. फेशियल केयर, हाँ, कॉस्मेटिक यूज टू क्लीन द स्किन, ये इम्प्रूव करेगा स्किन का कॉम्प्लेक्शन. देन इट विल गोइंग टू कंट्रोल एक्सेसिव ऑयल, नरिश करेगा स्किन को, ब्राइट करेगा, रेडियंट बनाएगा स्किन को. दैन इसमें एग्जांपल क्या है, हम लोग पपाया रिहाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, नीम तुलसी फेस वॉश. देन सैंडल आलमंड फेस वॉश. क्लिनजर में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक facial care product that is used to remove the makeup, dead skin cells, oil, dirt and other type of pollutants from the skin of the face. This helps to unlock pores and prevent skin conditions such as acne. A cleanser can be used as a part of skincare regimen together with a toner and moisturizer. It is an exclusive skin lightening formula. Super absorbency, antibacterial activity make an ideal ingredient for oily and acne prone skin. It acts like magnet to attract and absorb dirt.
मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, फेयरनेस क्रीम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। लाइक मॉइस्चराइज़र जो है ड्राइनेस को कम करेगा और स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। उसकी वजह से क्या है, स्किन जो है डल ड्राई फ्लैकी नहीं होगी। मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं क्लासीफाई किए जाते हैं, लाइक डे में यूज़ करने वाले होते हैं, कुछ नाइट में, कुछ हैंड एंड बॉडी पे होते हैं, कुछ ऑल पर्पस के लिए होते हैं, कुछ बैरियर क्रीम्स होते हैं। फेयरनेस क्रीम्स है इसमें, वाइटनर्स लाइक स्किन ब्राइटनर्स और स्किन लाइटनर क्रीम होती है। इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इन द स्किन। मोस्ट कॉमन टेक्निक टू naturally lighten darken skin, helps visible lighten the hyperpigmentation in the skin, nourishes skin to bright. Then woven mesh sponge, okay, which is made up of woven polyester fibers designed to unclog pores. Fibers were held together with glue that did not dissolve or soften after it was soaked in water. This made the fibers very stiff and harsh. Facial clothes, popular tool, cleansing face. Then some clothes have soap and moisturizer embedded in them and lather after you get them wet. Good choice for many skin types. Other do not have lathering soap and work more like a moist towel टॉवेल्स। देन क्लिनजिंग पाउच होने चाहिए। वेरिएशन ऑफ फेशियल क्लोथ की वजह से। देन मेड अप ऑफ टू ओपन लाइक वेव क्लोथ्स दैट हैव होल्स ऑफ वेरियस डायमीटर। ए प्लास्टिक मेम्बर विद क्लिनजर embedded is sandwiched in between the clothes and the size of the holes determines how much of the cleanser get to the skin। ये एक है। देन फेस ब्रश, देन इसमें इट वर्क्स लाइक एन electric toothbrush for the face. The brush lather sits and cleanses your face. नेक्स्ट है हैंड के लिए कौन से रखते हैं। हैंड के लिए क्या करना है, वेदर इट्स विद योर हैंड शेक और फ्रेंडली वेव, योर हैंड कैन मेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन। हमें पता है दैट्स वाई यू वॉन्ट दैम टू बी सॉफ्ट स्मूथ एंड एज हेल्थी एज पॉसिबल। ये जो होता है इम्पोर्टेंट होता है टू प्रोटेक्ट आवर हैंड फ्रॉम things like which will irritate like sun, water, household chores. Wash with moisturizing and hand sanitizer यूज़ कर सकते हैं, हैंड वॉश का यूज़ कर सकते हैं अच्छे वाले जो कि सॉफ्ट बनाए स्किन को। एंटीबैक्टीरियल सोप या हॉट वाटर मेक योर स्किन ड्राई आउट। यूज़ मॉइस्चराइजिंग soap that contain hydrating ingredients such as shea butter, olive oil or aloe vera to avoid stripping the natural oils from your skin. Clean under your nails with a nail brush. Then keep your nails trim and well shaped. Exfoliate your hands weekly, moisturizing your hands. Apply hand creams regularly. Treat your hands with a mask weekly. Apply a retinol treatment to dark spot. We can use vitamin E to moisturize our nails. Next, hand moisturizer. It is important in winter time when harsh weather can leave skin dry or cracked. हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक होता है, लाइक नॉन वाटर बेस्ड हैंड हाइजीन एजेंट। इट कंटेन मिनिमम ऑफ 60 to 95% ऑफ अल्कोहल, आर इफिशिएंट टू किल द जर्म्स, इनइफेक्टिव अगेंस्ट norovirus type viruses, the most common cause of contagious gastroenteritis. Then most are based on isopropyl alcohol, ethanol. Formulated together, we get thickening agents such as the carbomer into gel or humectant such as glycerin into liquid or foam for ease of use and to decrease the drying effect of the alcohol. अल्कोहल रब सैनिटाइज़र जो है किल करता है बैक्टीरिया को, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, टीबी एंड फंगी को। देन फीड के लिए देखते हैं, स्पेशल अटेंशन देना चाहिए फीड के लिए क्योंकि special attention is required. It will going to prevent the infection, odor and injury of the patient hands and feet. Problem जो है arise होती है from abuse, poor care of the feet such as wearing ill-fitted shoes. Area between the toes should be carefully checked. Patient with diabetes mellitus or peripheral vascular disease should be observed for adequate circulation of the feet. Because of poor vision and decreased mobility, the elderly are at risk for the foot disorders.
देन पाव के लिए क्या करना चाहिए, मोस्टली हमें उसे गर्म पानी के अंदर सोक करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से वो नेल्स सॉफ्ट बने, देन फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव हो सकें, देन उसे ड्राई रखना चाहिए, मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, सॉक्स पहनने चाहिए, देन रिमूविंग जैक्ट स्किन, देन वियरिंग कंफर्टेबल शूज़, अप्लाइंग दी एंटी फंगल फूड क्रीम्स. Then next, for the cleansing and care needs for neck, we pay a lot of attention to face and neglect neck cleanser. When dark patches or excessive skin cells make them neck area look a shade or too darker than the face, sun exposure and failure to exfoliate this area cause this coloration. Use a product formulated with antioxidant to cleanse thoroughly, brighten and protect your skin from free radicals. Garnier Skin Actives Clean and Gentle Clarifying Cleansing Gel यूज़ करने चाहिए. एक्सफोलिएट हमें करना चाहिए अपने नेक को एक तो हफ्ते में एक बार, जिससे कि वो ओल्ड स्किन डेड स्किन को रिमूव कर सके सरफेस से. होममेड स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्राउन शुगर, ए टाइनी स्प्लैश ऑफ लेमन एंड ए टीस्पून बीट ऑफ हनी. लेमन यूज़ करते हैं, ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, वो डिमिनिश करेगा अपीयरेंस ऑफ डार्क स्किन. मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं. यूज़ ए मॉइस्चराइज़र विद SPF ऑन योर नेक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सन, which is the number one cause of the skin aging. A formula with antioxidants will protect it from free radicals. Garnier Skin Actives Clearly Brighter Brightening and Smoothing Daily Moisturizer contains SPF 15 and vitamin C and E to protect you from the elements and will give you the glowing skin. Neck Care Cosmetic Moisturizing Cream, Cleansing Cream, Face Wash, Fairness Cream. अभी स्कैल्प के लिए देखते हैं. स्कैल्प के लिए क्या है, बाल बार बार धोने चाहिए, अच्छे से वॉश करने चाहिए, अच्छे से शैम्पू यूज़ करना चाहिए वगैरह, ये सब हो सकता है. देखते हैं अभी. हैविंग ए हेल्थी scalp means having healthy hair. Because of dirt, oil, sweat and products that you use on your hair, your scalp can get dirty and full of buildup of bacteria and other things. Cleansing your scalp every week to remove the residue can help reduce itching, dryness, flex while promoting healthier hair. इसमें क्या है, हमें क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना चाहिए. वंस ए मंथ wash your hair with this. Leave on a scalp for 3 minutes. Help to remove buildup and dead skin cells. Try a scalp cleansing product. Buy scalp exfoliating scrubs, cleansing foams you massage onto your scalp, and serum that help remove dead skin cells. Use a deep conditioner after cleansing your scalp. When you cleanse your scalp, you are stripping everything from your hair. This means that you need to condition your hair after cleansing your scalp. Use a deep conditioner on your hair to replace all moisture lost when you cleansed your scalp. Apply on tips of hair and not on scalp or length of hair. Use a leave-in conditioner टू हेल्प. ओके, मतलब क्या है, कंडीशनर वैसे ही रखना चाहिए टू हेल्प रिप्लेस मॉइस्चराइज़र. सेट ए स्कैल्प्स क्लिनजिंग शेड्यूल. क्लिनज करना चाहिए स्कैल्प को नेचुरली. विनेगर यूज़ कर सकते हैं, एप्पल सीडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं. देन मेक ए कैसल सोप एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर. ब्राउन शुगर स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, सिनेमन मास्क यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा स्क्रब, देन सॉल्ट स्क्रब. ऐसे अलग अलग तरीके से यूज़ करें. केयर में क्या केयर करनी चाहिए, उसे हमें स्कैल्प को प्रोटेक्ट करना चाहिए सन से, शैम्पू करना चाहिए रेगुलरली, देन केमिकल ट्रीटमेंट को कम से कम यूज़ करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, प्रिजर्व करेंगे, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे. देन केयर ऑयल अच्छे से अप्लाई करना चाहिए, शैम्पू से अच्छे से यूज़ करना. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड फ्रॉम द कॉस्मेटिक्स एंड फ्रॉम सेम सेकेंड सब्जेक्ट्स, सेमेस्टर सेकेंड सब्जेक्ट. थैंक यू.